हेलो गाइस। आज हम लोग मूल कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं और मूल कॉन्सेप्ट बेसिक से पढ़ेंगे और पूरा कंप्लीट करेंगे आज के आज ही। हेलो गाइस। आज हम लोग मूल कॉन्सेप्ट पूरा कंप्लीट करेंगे। आज हम लोग मूल कॉन्सेप्ट पूरा कंप्लीट करेंगे। हेलो गाइस, माइक टेस्टिंग। हेलो हेलो गाइस, माइक टेस्टिंग। हेलो, लेट्स स्टार्ट। हेलो गाइस, माइक टेस्टिंग। हेलो, लेट्स स्टार्ट। Just a minute. Basically, more concept, basics of chemistry, matter, physical classification, and another is chemical classification, physical classification in
There is plasma and solid, liquid and gas, chemical classification, pure substances, which there are pure elements, ferrous are pure substance, compounds, CO2. Compounds mean different types of elements when combine each other, mixtures, homogeneous mixture and heterogeneous mixture. 30 atoms of hydrogen present in molecule. Acha. Atom is considered as O, nitrogen, Fe, sodium. Molecules, atomicity, atoms divided by atomicity. Molecules more than one atom, O2, N2, P4, CO2, H2O1, H2SO4. Molecules, atomicity into atoms divided by atoms to molecules होगा divided by atomicity, और molecules से atoms multiplication by atomicity. 30 atoms of hydrogen present in uh, how many molecules? 10 molecules of CH4.
Okay. Question number 1 is solids have definite volume and shape. So physical classification in plasma, physical classification have plasma, solid, liquid and gas. Chemical classification pure substance, elements and mixtures. Elements are Fe, homogeneous and heterogeneous. Okay. So today we will start the chemistry lecture with empirical formula, stoichiometry and limiting reagent. Okay. So let's start from there, then we will revise it. What is temperature? It can be defined as that physical property of substance which decides the direction of flow of heat when the substance makes physical contact with other substance. C plus 273 Kelvin equals to in Kelvin, and when it is converted to Fahrenheit it will be delta C 9 by 5 plus 32 equals to Fahrenheit. Minimum molecular mass. What is minimum molecular mass? An enzyme has 2.8% nitrogen by mass. An enzyme has 2.8% nitrogen by mass. What will be the minimum molecular mass? 2.8 of nitrogen is present in 100 of enzyme. Therefore, 1 equals to 400 by 2.8. 14 equals to 100,000. 2.8 का जो पॉइंट से जो 10 आता है वो ऊपर गया, into 14 divided by 2 equals to 500 gram. A compound has hemoglobin like structure. It has 1 ferrous. It contains 5.6% of Fe. The approximate molecular mass is minimum molecular mass 100 divided by percentage into atomic mass. So 1000 equals to 5.6 into 56 equals to 1000 gram. A compound possesses 8% sulfur by mass. A compound possesses 8% sulfur by mass. The least molecular is minimum molecular mass formula equals to 100 by 8 into 32 equals to 400. This question was came in 2015. Empirical formula, mass and molecular formula.
Empirical formula, it represents the simplest whole number ratios of atoms of elements in the formula. मीथेन एक से नीचे नहीं जा सकता. n equals to multiplication factor. How to calculate empirical formula? Element CHON, percentage or ratio of fraction atomic mass. Okay. What is the smallest? इसको divide करना है आपको, ठीक है? The empirical formula and the molecular mass of a compound are CH2O 180 gram respectively. What will be the molecular formula of the compound? Molecular formula equals to 180 gram, empirical formula equals 30 gram. So what will be the molecular formula of the compound? Molecular formula mass is given as 180 gram, empirical formula mass 30 gram. N equals to 180 by 30 equals to 6. Therefore, molecular formula of that compound, empirical formula CH2O into N will be the molecular formula, that is C6H12O6. Okay. The simplest formula of the compound containing 50% X atomic mass, 10 mu and 50% Y. Element X atomic mass 50, simplest ratio Y 50 by 20 equals to 2.5, 10 equals to 5, 5 by 2.5 equals to 2, 2.5 by 2.5 equals to 1. Empirical formula will be X to Y. An organic compound contains 78% by weight carbon and remaining percentage of hydrogen. The right option for the empirical formula of this compound is elements CH percentage atomic mass 78 by 12, 22 by 1, percentage by atomic mass. Okay, then simplest ratio, that will be small. Okay, now comes the stoichiometry, which is the most important part of this chapter. For balanced chemical equation, N2 plus H2 NH3, that will be, there are 3 H3, so 3 and there will be 2, so this is the balanced. That means 1 mole N2 reacts with 3 mole H2 and gives 2 mole NH3. It can be 1 molecule, 3 molecule of H2 and it will give 2 molecules of NH3. It can be 10 molecule, it can be 30 molecule, means in terms of mole. In terms of volume, it also can be 22.4 volume in of N2 reacts with 3 into 22.4 divide into equals to 2 into 22.4 liter in terms of volume. It can be in terms of volume 1 liter. Ha! Jai!
Okay guys, I'm back. Let's start. So stoichiometry, we have to balance the equation, okay, in terms of molecules and in terms of volume. In whatever the it is given, we have to balance it, okay. So stoichiometry, what ChatGPT says about stoichiometry? Okay, Azan, thank you. Stoichiometry is the branch of chemistry that deals with the quantitative relationship between reactants and products in a chemical reaction. Stoichiometry is the branch of chemistry that deals with the quantitative relationship between reactants and products in a chemical reaction. The mole concept is the central to stoichiometry as it helps in accounting number of particles, atoms, molecules, and relating them to the mass, volume, and the number of entities in a reaction. So it is help in relation, okay. The mass of 1 mole of a substance, molar mass, gram or formula, number of moles we all know equals to given mass divided by molar mass. Moles equals to, if there is given a mole, 1 mole of H2O is 18 gram molar mass. Water contains 1 mole of water contains 18 gram molar mass of H2O. If we have 36 gram of H2O, then what will be the moles? So gram given weight by molar weight, molecular weight, that is 18, and we have 2 moles. So it is the formula. So now the stoichiometry, we will learn about the concept of stoichiometry. That is, in a balanced chemical equation, the coefficient represents the mole ratio of reactants and products. Example, that is 2H2 plus O2 will make 2H2O. Okay, if we have 4 moles of H2, then we will need 2 moles of O2. So in this relation, 2H2 plus O2 gives 2H2O. So we will need 2 moles of, if there is 4 moles of H2, then we need 2 moles of O2 to react with to make 4 moles of water. Okay, so are you understanding the relationship? I think you are. So hello, please like this live session. Please like this live session. Whoever is watching, please like this live session so that I will get motivation from it. Okay. If 10 gram of CH4, thank you Azan, thank you Azan. If 10 gram of CH4 is burnt completely, calculate the mass of O2 required. Okay.
if 10 gram of CH4, so given CH, we have to write the equation first. CH4 plus oxygen gives CO2 plus H2O. First balance the reaction, that is C, okay, 2O2 will be there and 2H2O. Please like this session whoever is watching, okay, and subscribe also. So standard, there is, what is given, 10 grams. So standard molecular mass of CH4 is 16 gram. For O2 it is 64 gram by after balancing, and for carbon dioxide it is 44 gram, and for water it is 36 gram. So we have to find mass of O2 required and mass of CO2 and H2O produced. Mass of O2, if mass of CO2 produced will be 10 into 44, which is standard, divided by okay, so I will arrange a board after some time. Thank you, Ajan. Thank you. हाँ, अजान, आप कहाँ से हो अजान? अजान, आप कहाँ से हो? Okay, so it is like that. Whoever is seeing this live, please like this session. Please like this session. Subscribe and also comment. Okay, so mass of CO2 produced 10 into 44 divided by 16, which is the standard of CH4, and given weight by 16 into the standard of that mass. Mass of CO2 produced is 440 divided by 16.
mass of H2O produced 10 into 36 divided by 10. Okay. হ্যাঁ, কথা বলতে বলতে পালিয়ে গেছে, ফোন যেই কানে ধরেছি আর মেসেজ করছে না। ওই হবে। হ্যাঁ, কারণ যেই ফোন কানে ধরলাম পালিয়ে গেছে। হ্যাঁ। Okay, so let's back to the topic. Mass of H2O produced 10 360 by 16. Another question. Okay, so the formula is mass of O2 required given into standard divided by 16, which means standard of given. If mass of CO2 produced 10 into 44 divided by 16, stoichiometry is nothing but a calculation of equation. Okay, stoichiometry is nothing but a calculation of equation. That's it. Now the next question comes. If 4 moles of CH4 is burnt completely, calculate volume of O2 required, mass of H2O produced, moles of CO2 produced. Standard. Okay, let's complete the equation first. CH4 plus O2 gives CO2 plus water. Okay, so now it is CH4 which is given is 4 mole, but actual standard is 1 mole. O2 is required in terms of volume, so we will first balance the equation, then we will equate it. We will solve the problem. O2 is 22.4 is standard, and CO2 is 1 mole of course, and water is 36 gram, which is 2. So it is found in liter, it is CO2 is found in mole, and in terms of gram the water is found to be in terms of gram. So volume of O2 is 4 given into standard of that O2, that is 2 into 22.4 divided by 1, means CH4 standard, equals to the answer. Moles of CO2, 4 into 1 by 1 equals to 4 moles of CO2 will be produced. Mass of H2O, 4 into 36 divided by 1 equals to 144. So the लाइव लेक्चर जो भी देख रहे हैं प्लीज एक लाइक कर दीजिए, और इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस सेशन को लाइक कर दीजिए।
Now next is 2H2 plus O2 gives 2H2O. If 5 mole of H2 if 5 mole of H2 is reacted completely, calculate the volume O2 required and mass of H2O produced. Okay, so 2H2O plus O2 gives 2H2O. If 5 mole of H2 is reacted completely, so given 5 mole liter gram. Now standard is 2 mole, 22.4 liter and 36 gram. Whoever is watching this live, please subscribe. Whoever watching this live, please subscribe and like this session. Volume of O2, Ajan, if you are seeing this comment, so okay, you are from Kashmir, that is good. Volume of O2 will be calculated. So this concept is clear, I think. Write a balanced equation for the combustion of propane. C3H8 plus O2 gives 3CO2 plus H2O. So balance and how many moles are reacted. Okay, so this is the basic question. Find maximum moles of CCl4. Okay, let's solve this question. Ten moles given, 1 mole standard, 1 mole. So it is 10 moles answer. Because when we will multiply it, 10 into 1 divided by 1, it will be 10. How many grams of calcium oxide? Class will be 2 to 2.5 hours. Okay.
So how many grams of calcium oxide is obtained on heating 100 gram of calcium carbonate? Okay, so CaCO3 gives CaO plus CO2. 100 gram, 56 gram and 44 gram. Okay. Okay, so whoever watching this live, subscribe this channel. 10 लोग देख रहे हो, आप सब्सक्राइब कर दीजिए. आप लोग की एक सब्सक्राइब से मोटिवेशन मिलता है बहुत. तो चलिए CaCO3 का जो on heating 100 gram of CaCO3, how many calcium oxide is obtained? Okay, so 100 gram यहाँ पर गिवन है, तो कितना कैल्शियम ऑक्साइड बना? ठीक है, ओके. सो given into standard calcium atomic number 40, oxygen atomic number 16. So 56 gram is standard. So by applying the formula, we will get 56. So 56 gram of calcium formed by heating 100 gram of calcium carbonate. अगर आप ये लाइव देख रहे हैं तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए. चलिए, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, और एक क्वेश्चन है, CaHCO3 2 required to prepare 1.50 moles of CO2 according to the equation CaHCO3 2. Okay. First we have to write the equation. So the number of moles required to prepare, so here the standard is
जो भी इस सेशन को देख रहे हैं आप लोग इस लाइव को लाइक कर दीजिए। अगली बार से मैं बोर्ड में पढ़ाने की कोशिश करूंगा। The equation, okay, shows that 2 moles of aluminium react with 3/2 moles of oxygen to produce 1 mole of aluminum oxide. Okay, that is the correct option. How many grams of H2 are required to consume 2 moles of CO? First, write the equation again. CO plus H2 gives CH3OH. So CO, that is 1 mole. 2H2, that is how many grams of H2 are required? If 1 mole, okay, if the given is 2 mole, then it will be required 4 mole, and standard is 1 mole, it is 2 mole, and it is 1 mole. So what is the how many grams of H2 are required? Okay, so required H2 will be given into standard divided by standard required given. Okay, so given is 4 given 2 into mass required, that is 2 into 4. Divided by দেখতে হবে। হ্যাঁ হ্যাঁ দাঁড়াও যাই। কোনটা? কোথায়? এটা তো আমার নয়। না না ওটা দিয়ে যায়নি। ওটা ভালো ছাতা ছিল। না না দিলেই হতো। না না দিয়ে গেছে এখানে সুকুতে।
हाँ. Hmm. जो भी इस लाइव को देख रहे हैं आप लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल में लाइव वीडियोस आएगा, स्टडी विथ मी आएगा लाइव. सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज, सब्सक्राइब कर दीजिए. बार बार नहीं बोलता हूँ एक चीज, सब्सक्राइब कर दीजिए जल्दी. अगर एग्जाम में फेल टेल नहीं होना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए. How many grams of H2 are required to consume 2 mole of CO? Okay, divided by 4 mole. Okay, sorry. It is mass required, and that will be it is 8 gram. Okay. Okay, so 1 molecule of CO2, CO reacts with 2 molecules of H2. 1 mole of CO reacts with 2 moles of H2. What you need to find, that is, you are given 2 moles of CO and need to find how many grams of H2 are required. For 1 mole of CO needs 2 moles of H2. 2 moles of CO will need 1 mole of CO2. It is a simple case. 1 mole of CO if needs 2 moles of H2, then 2 moles of CO2 will require 4 moles of H2. Convert moles of H2 to grams. Molar mass of H2 is 2 grams. Now multiply by the number of moles to 8 grams. Okay, so you did not have to find the moles, you have to find the mass. A mole is given, that is 4 mole. Okay, you hope you understand. Okay. So
moles equals to mass divided by molecular mass. Molecular mass of 2H2 is 4 and given is 2. So it will be 2 into 8. Okay, 8 gram. Okay, 8 grams. The number of moles of oxygen obtained by the electrolytic decomposition of 90 gram water is the number of moles of oxygen obtained by the electrolytic decomposition of 90 gram water is 90 gram given 36 gram standard and it is 1 mole, and therefore number of moles you have to find, then it is easy. First you have to convert 90 gram into moles. Okay, so 90 into 1 mole divided by the standard of given, that is 636, 2.5 mole. Okay, my name is Rishabh. Okay, Rishabh. Okay, Azan. Now the number of moles of oxygen obtained by the electrolytic decomposition question is cleared, I think. Butane C4H10 butane C4H10 burns with oxygen in air to give carbon dioxide and water. C4H10 plus O2 bonds with oxygen plus H2O. What is the amount in moles of carbon dioxide produced from 0.515 mole of C4H10? Okay, so given that is 0.15, 1 mole is standard. Okay, now
We have to find what is the amount of moles of carbon dioxide produced, given that is 0.15 multiplied by standard divided by okay. So it is 0.60. So these are there are many questions we have practiced of stoichiometry. Now the concept comes is purity concept, which is mass of pure reactant percentage purity into mass of sample. Percentage purity into mass of sample, which is mass of pure reactant formula. Okay, reactant sample equals to pure reactant plus impurities. Percentage purity into mass of sample. What is mass of pure reactant? Again I am saying that is percentage purity into mass of sample. Percentage purity equals to mass of pure reactant divided by mass of sample into 100. Again, mass of pure reactant percentage purity into mass of sample. And if percentage purity is how we have to find, then will be the mass of pure reactant divided by mass of sample multiplied by 100. Okay, so this is the formula. You have to learn. Question comes, 200 gram sample CaCO3 is decomposed. A 200 gram sample of CaCO3, 80% purity, is decomposed. Calculate mass of CO2 produced. First we have to write the equation CaCO3 CaO plus CO2, then balance the equation.
Okay, 100 gram, a mass of 200 sample of 200 gram sample. Okay, so given is 200 gram, standard is, it is standard 44 gram. If 200 gram is given, then what to do? What to do? Then don't take, apply the formula of the stoichiometry, but don't take the 200 gram. So first multiply it by percentage purity. 200 into 80 divided by 100, which is 160 gram. Now calculate it. 160 into 44 as given, 160 as given into 44 divided by 100, that is 44 into 1.6. So this is the question. Okay, the right option for the mass of carbon dioxide produced by heating 20 gram of 20% pure limestone is, okay, CaCO3 CaO plus CO2, 100 gram, 44 gram. Now the given sample is 20 gram, but it is only 20% pure, so pure is multiplied by the given by the percentage. It is 4 gram pure. Now find the CO2. So 4 into 44 divided by 100, that is 1.76 gram. 20 gram of magnesium carbonate sample composes on heating to give carbon dioxide and 8.0 gram of magnesium oxide. What be the percentage purity of magnesium carbonate in the sample? First we have to convert it. 20 gram of, first MgCO3 MgO plus CO2, 84 gram, 40 gram. It is standard. Now first find pure. What is given? That is 8 gram into percentage purity. What is the percentage purity of magnesium oxide? Okay, what is the percentage purity? What is the magnesium carbonate in the sample? Eight gram of magnesium oxide is given. For pure MgCO3 is
20 gram of magnesium carbonate in the sample is given on decompose. So you first have to find the atomic number of MgCO3, that is 84 gram MgCO3. For 40 gram of magnesium oxide is formed from 84 gram. Then what will be the, okay, that is 8 gram, 8 into standard, okay, 8 into standard, that is 40 divided by, sorry, 8 into standard of MgCO3, which we have to find, that is divided by standard of the given. Okay, so it is 16.8 gram, and then percentage purity, 16 divided by sample mass into 100, that is 84%. Okay, now yield concept, that is yield concept. Percentage yield equals to actual yield by theoretical yield into 100. Okay, if 300 gram of CaCO3 hey, art and drawing, why are you abusing me? Don't abuse art and drawing. गाली मत दे. अगर गाली देगा ना, हमको भी आता है, समझा? सॉरी काहे को बोल रहा है? ओके, इट्स ओके, सॉरी बोल दिया, इट्स ओके. कहाँ से है बे तू? आर्ट एंड ड्राइंग बिहार या यूपी से है क्या? बिहार या यूपी से ही ऐसे लोग आते हैं. CaSO4 plus H2CO3 H. So यहाँ पर given है if 300 gram is given of CaCO3. चल ठीक है, सॉरी बोल दिया, इट्स ओके.
और स्टैंडर्ड है 100 ग्राम। कैल्शियम 40 प्लस कार्बन 12, that is 56. 56 plus 64, that is 100. And gives 272 with if 300 gram of CaCO3. हाँ प्रशांत भैया को जानते हैं। क्या हुआ? क्यों पूछ रहे हो? प्रशांत भैया को जानते हैं कि नहीं? 300 grams and it is 136 gram given. कैल्शियम 40 प्लस, हाँ हाँ जानते हैं। आशी ठीक है। आप কখন আসবো? ठीक है। हाँ सीबीएसई का प्रशांत भैया को जानते हैं। सबको जानते हैं भाई, सबको जानते हैं। लीकर है तो है, अब क्या कर सकते हैं। लीकर है या पेपर लीकर है या पेपर सेटर है या पेपर माफिया है, जो है वो है। 300 ग्राम dash gram of CaCO4, how much formed? 300 gram. Then we have to find the percentage yield. So that is 2 gives 272 gram of CaCO4. Okay, we have to find this theoretical yield. अच्छा, तो हमारा यहाँ लाइव क्लास चलता है और लाइव स्टडी चैनल भी होता है, आप देख के पढ़ सकते हो और सारे चैप्टर्स कवर करते हैं यहाँ पर इस चैनल पे। ठीक है, सारे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सारे चैप्टर्स एक वन शॉट में मैं समझा देता हूँ। ठीक है, वेलकम। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। आर्ट एंड ड्राइंग। थैंक यू आर्ट एंड ड्राइंग। पीसीएम नहीं, पीसीबी, पीसीबी बायोलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। चलिए, तो CaCO3 plus H2SO4 gives CaCO4 plus H2CO3। हमको पूछा है फाइंड द परसेंटेज यील्ड ऑफ द प्रोडक्ट। सो परसेंटेज यील्ड का जो फॉर्मूला है, परसेंटेज यील्ड ऑफ द प्रोडक्ट एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय मैथ्स अभी नहीं पढ़ा सकता क्योंकि सारे चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं पीसीएम के, पीसीबी के। तो मैथ्स छोड़कर फिजिक्स और केमिस्ट्री सारे होगा। ठीक है, मैथ्स छोड़ के फिजिक्स और केमिस्ट्री आप इस चैनल में देख सकते हैं।
percentage yield divided by 272 divided by 3 into 36 into 100 equals to 66%. हाँ जाची। ओके सो अभी 5 मिनट का ब्रेक ले रहा हूँ, उसके 5-10 मिनट का ब्रेक, उसके बाद हम लोग फिर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 5-15 मिनट का ब्रेक अभी ले रहे हैं।
सो वेलकम बैक। सो अभी हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज यील्ड का क्वेश्चंस। चलिए शुरू करते हैं परसेंटेज यील्ड का क्वेश्चंस। परसेंटेज यील्ड का जो फॉर्मूला है वो है एक्चुअल यील्ड बाय थ्योरेटिकल यील्ड। ठीक है, हाँ थोड़ा लेट, सॉरी थोड़ा लेट हो गया, कोई बात नहीं, अभी पढ़ते हैं। इफ 300 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट अगर 300 ग्राम लिया है तो उससे रिएक्ट कराया H2SO4 से, तो जो CaSO4 बन रहा है वो कितना होगा। केमिस्ट्री की स्ट्रेटजी वीडियोस, क्या केमिस्ट्री कौन सा क्लास में हो आप वो तो बताओ। H2CO3, तो 300 ग्राम। ओके, सो केमिस्ट्री के लिए आप एक चैप्टर कंप्लीट करो पहले, उसके बाद जो क्वेश्चंस है एनसीईआरटी का वो करो। अगर आप सीबीएसई है, अगर आप दूसरे से हो मतलब दूसरे बोर्ड से, तो उस बुक का क्वेश्चन सारे कर लो, हो जाएगा, क्योंकि आपका तो थ्योरी ही आएगा ज्यादा। पहले चैप्टर को समझो। चलिए, 100 ग्राम अगर स्टैंडर्ड है और 136 ग्राम CaSO4 का स्टैंडर्ड है, आप मॉलिक्यूलर मास निकालना पड़ेगा CaSO4 का। कैसे निकालेंगे? कैल्शियम का 40, सल्फर का 35, ऑक्सीजन 16 इंटू 4, दैट इज 16 इंटू 4 कितना होता है? 4 6 36, 76। तो ऐसे करके आपका होता है। तो पहले तो थियोरिटिकल यील्ड निकालना पड़ेगा, फिर परसेंटेज यील्ड निकलेगा। एक्चुअल यील्ड बाय थियोरिटिकल यील्ड इनटू 100, एक्चुअल यील्ड बाय थियोरिटिकल यील्ड इनटू 100। डॉक्टर बनने के लिए पूरी जर्नी बता दीजिए। अभी तो आप 9th में हो, तो 9th में अच्छे से पढ़ाई करो, क्योंकि 11th में 9th का ही सब कुछ डिटेल में होगा। और 10th में भी अच्छे से पढ़ाई करो, क्योंकि 10th का ज़्यादातर 12th में डिटेल में होगा। तो 9th से ही पढ़ना चालू कर दो अच्छे से। जब आप 11 में आओगे तब आपका बेसिक्स बहुत हद तक क्लियर रहेगा। हालांकि 11 से ही असली पढ़ाई शुरू होती है। तो अभी आप ठीक से पढ़िए, और क्या, सारे क्वेश्चंस कीजिए। परसेंटेज यील्ड जो होता है 272 एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थियोरिटिकल यील्ड। थियोरिटिकल यील्ड कितना निकला? 136 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो वो निकला 66.66%। तो एक्चुअल यील्ड दे रखा है, और ठीक है, पर आप एब्यूज मत कीजिए, फिर आप डॉक्टर कैसे बनेंगे अगर आप एब्यूज करेंगे अभी से। तो 66%, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C formed when 20 mole of A react with excess of B as per the reaction. Okay, 2A plus B gives 3C. So परसेंटेज यील्ड यहाँ पर दे दिया है, आपको निकालना क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C formed
ठीक है, ये आपको निकालना है। चलिए, ये क्वेश्चन तो हो गया। अब है लिमिटिंग रिएजेंट पढ़ने का समय। लगभग 2 घंटा लग गया स्टोकियोमेट्री करने से में ही। अभी भी पूरा मोल कॉन्सेप्ट बाकी है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो है उसमें बाकी है। चलिए, reactant which is fully consumed or used during reaction. What is limiting reagent? Reactant which is fully consumed or used during reaction means reaction. When more than one reactant is quantity is given. When more than one reactant's quantity is given. Suppose 2A plus B gives C. Given 10 mole. For a complete reaction of 10 mole of A, moles of B required. Moles of B required. So we have to find the moles of B required. Then they will have to do 10 into 1. Moles, shortcut is moles by stoichiometric coefficient equals to LR, small limiting reagent. What to tell? Sir, please tell. क्या बोलूं भाई? 10 into 1 by 2 equals to 5 mole. So moles of C is 2H2 plus O2 gives 2H2O water. Given 10 gram and 40 gram. For complete reaction of 10 gram, mass of O2 required is, तो फर्स्ट हमको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। फॉर complete reaction of 10 gram H2, mass of O2 required for complete reaction of 10 gram of H2, mass of O2 is required 10 into standard divided by standard of H2, 4.
then 80 gram of H2 is required, which is not possible. Okay, 40 gram is given. So for 10 gram to be complete the reaction, the mass of H2 required for complete reaction of 40 gram O2, mass of H2 required is 40 into 4 divided by 40 into 4 divided by 32, that is 5 gram H2 required to complete the reaction of 40 gram of O2. So excess reactant is यूट्यूब पे मैं पिछले एक महीने से excess reactant is 10 gram minus 5 gram. Okay, so it is 45 gram. टोटल टपाटप, टोटली टपाटप पढ़ रहा हूँ भाई, पढ़ा रहा हूँ भाई. आर्ट एंड ड्राइंग, थैंक यू. इंस्पिरेशन कब से बन गया? अभी आप देखे, आप इंस्पिरेशन बोल रहे हो. इंस्पिरेशन तो जिसको आप बहुत दिन से जानते हो, पहचानते हो, अगर उसको बोलना चाहिए. आप इंस्पिरेशन ऐसे ही बोल रहे हैं. चलिए, तो लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है. रिएक्टेंट व्हिच इज फुली consumed और used during the reaction. ठीक है, उसी को बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट. आप अगर मोल कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो तो आपको ये जानना जरूरी है. लिमिटिंग रिएजेंट थोड़ा हार्ड टॉपिक है. ठीक है, चलिए, दोनों जिसका भी दिया है आपको दोनों तरफ देखना है. आर्ट एंड ड्राइंग ज्यादा मत बोल. आप टोटली टपाटप को क्या बोल रहे हैं भाई? Limiting reagent in a chemical reaction is that which reacts completely in the reaction. ये क्वेश्चन था, मैं बता दिया. 8 gram hydrogen H2 and 32 gram oxygen is allowed to react to form water 2H2 plus O2 2H2O. 8 gram of hydrogen बोल रहा है यहाँ पर. तो which of the following statement is correct?
2H2O O2 है 4 ग्राम 32 ग्राम is standard 36 gram okay so I have to find हमको फाइंड करना है कि कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है और कौन एक्सेस है गिवन है 8 ग्राम एंड 32 ग्राम पहले हम देखेंगे फॉर कंप्लीट रिएक्शन of 8 gram of H2 mass O2 required that is 8 into 32 divided by 4 64 gram required for complete combustion of OH2 of 8 gram so ये possible नहीं है this is possible so for complete reaction of O2 mass of H2 is here तो 32 ग्राम completely combustion मतलब used हो जाएगा 36 ग्राम वाटर बनाने के लिए एक्सेस रिएजेंट क्या होता है भाई एक्सेस होता है कि आपका निकला कितना ओके सॉरी 32 into 4 36 4 ग्राम सो मास ऑफ H2 रिक्वायर्ड है 4 ग्राम और 32 ग्राम बनाने के लिए 36 ग्राम ठीक है 36 ग्राम वाटर बनाने के लिए अपन को 8 ग्राम वाटर 4 ग्राम वाटर और 32 ग्राम ऑक्सीजन लगेगा तो एक्सेस कितना बच गया इसके एक्सेस है H2 तो एक्सेस 4 ग्राम बच गया ठीक है 4 ग्राम बच गया चलिए इक्वल वॉल्यूम ऑफ N2 and H2 have to form 2NH3 so the limiting reagent is বলো বলো শুভ্রদীপ কেমন আছো বলো
जो भी यहाँ पर है वो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। Glow and lovely. Good, Yasha. হ্যালো, করবি না? ও
Yes, so 0.5 mole of H2SO4 is mixed with 0.2 mole. The maximum number of moles of CaSO4 formed is one. The maximum number of moles of CaSO4 formed is okay. So 0.2 दिया है, 0.5 दिया है, आपको बताना है कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है और मोल निकालना है आपको, ठीक है। आपको मोल निकालना है। चलिए 0.2 minus 0.2 0.5, तो यहाँ पर 0.2 C. When 5 mole of N2 reverse process, first then 10 into given 2 divided by standard 3 by 3 mole will be formed. When 22.4 liter is mixed with 11.2 liter Cl2, first write the reaction. H plus Cl2 gives 2HC. So given 22.4, to limiting reagent. So find the moles of H. Okay. For the reaction of 2P plus Q gives R, 8 mole of P reacts with 5 mole of Q will produce how much R? 1, 1, 2. Okay, so for the reaction of A plus 2B gives C. For the reaction 8 mole, 5 mole, नेक्स्ट है concentration terms. Weight by weight, volume by volume,
weight by volume, volume by weight, mass of fraction, mole of fraction, volume of fraction, ppm, ppb. Molarity equals to m n solute divided by volume of solution in liter. M equals to n solute by weight of solvent ओके सो द लास्ट पार्ट ऑफ द मोल कंसेप्ट हम लोग पढ़ लिए और अब जो पढ़ेंगे वो है थोड़ा पहले का बेसिक्स पढ़ेंगे। ये सिर्फ मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, आपको फटाफट बता दूंगा, उसके बाद आपका सेशन ख़त्म। ये बोल रहा है मैटर होता है, फिजिकल क्लासिफिकेशन होता है, केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल में क्या क्या रहता है, प्लाज्मा, सॉलिड, लिक्विड, गैस। केमिकल क्लासिफिकेशन में क्या क्या रहता है, प्योर सब्सटेंस में और मिक्सचर्स। मिक्सचर्स में दोनों आते हैं, होमोजेनस और हेट्रोजीनस। ठीक है, फिर एटॉम्स। एटॉम क्या होता है भाई, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और मॉलिक्यूल्स O2 N2, मोर देन वन एटॉम। हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल जिसमें दोनों होता है, होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल O2 N2 P4 ये सब होता है। थर्टी एटॉम्स ऑफ हाइड्रोजन इज प्रेजेंट इन, ये आप कर सकोगे जब मॉलिक्यूल्स दिया रहेगा, एटॉम्स निकलने बोलेगा तो इनटू एटॉमिसिटी कर देना। एटॉम्स दिया है, मॉलिक्यूल्स निकलने बोल रहा है, डिवाइडेड बाय एटॉमिसिटी कर देना। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम आपको पता है, चार्ज वगैरह आपको पता है, पॉजिटिव। हाँ चलो ये सब छोड़ो। अच्छा, आइसोटोप्स। आइसोटोप सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है, आइसोबर सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स होता है, आइसोटोन सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होता है। ये सब आप कर चुके हो, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। टाइम वेस्ट ही होगा आपका। ये डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में बता देता हूँ। Matter consists of very small individual particles called atoms. All the atoms of the same element have identical properties including size, mass and shapes. Atoms of different elements have different mass and also have different chemical properties. When atoms of same or different elements combine together to form compounds, they combine in a fixed ratio, a simple whole number ratio. Atoms of two elements may combine in different ratios to form more than one compound. Atoms in a chemical reaction are neither created nor destroyed, but they are reorganized. 20 molecules. Okay, so one molecule was 80, 20 into 80 x to 32, there will be 50. So 50 molecules of O2 will be required to barabar the molecules 80 molecules of SO3. मोल कंसेप्ट आपको पता है, ये ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। चलिए ये हो गया। फिर आपको वो सब निकलना आता है, मोल्स वगैरह। वॉल्यूम दिया रहेगा मोल्स निकलने का, वेट दिया रहेगा, उसको आपको करना है। फिर फाइंड मास। चलिए ये लगता है मुझे इम्पोर्टेंट है।
फाइंड द मास ऑफ, चलिए ये भी हो गया। वॉल्यूम दिया रहेगा, मोल निकालने को, ये सब पूरा ना हो गया भाई। Law of conservation of mass, it states that mass can neither be created nor be destroyed in a chemical change. Total mass remains conserved. A balanced chemical equation is in accordance with, because mass can neither be created. The law of constant or definite proportion, a given compound always contain exactly the same proportion of elements by weight, irrespective of the source or method of preparation. ओके, सो आज के लिए इतना ही। मोल कॉन्सेप्ट लगभग पूरा खत्म हो गया। अब अगर बचा है तो चलिए पीवाईक्यू थोड़ा कर लेते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर से ज्यादा सवाल नहीं आया मूल कॉन्सेप्ट में, ठीक है। चलिए पीवाईक्यू का एक अलग सा सेशन रखेंगे। अभी के लिए इतना ही। ओके बाय, फिर से मिलते हैं दूसरे लाइव सेशन में।